जी, तो एलेक्स गार्लैंड की $15 million बजट की सिविल वॉर सिनेमाज में आ चुकी है. So when I saw the trailer of this movie the first time, I was like super excited, and I was like, okay, I really need to go and watch this movie first day, first show. Issued warnings to the Western forces as well as the Florida Alliance. The three-term president assures the uprising will be dealt with swiftly. Let me know if you want to try anything on. Are you guys aware there's like a pretty huge civil war going on all across America? We just try to stay out. With what we see on the news, seems like it's for the best. When I went to the cinemas, was it what I expected? Well, okay. पहले let's see. मैं थोड़ा सा आपको स्टोरी के बारे में बताती हूँ without any spoilers, and then I'll let you know what I thought about the movie. एलेक्स गार्लैंड ने ये मूवी डायरेक्ट भी की है और इसकी स्टोरी भी इसी ने लिखी है. आई डोंट नो अगर आप लोगों ने एक्स मशीना या एनाइलेशन देखी है और इवन मैन जो 2022 में आई है, वो सारी एलेक्स गार्लैंड की डायरेक्टेड मूवीज है. मूवी स्टार्ट होती है विद द यूएस शोन इन अ स्टेट ऑफ अ सिविल वॉर. सिविल वॉर क्यों हो रही है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीजें मिसिंग है. तो एकदम से बस आप एक स्टोरी के अंदर चले जाते हैं और उसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक सिविल वॉर हो गई है. एंड दीज 2-3 स्टेट्स जो है, कैलिफोर्निया, टेक्सास एंड इवन पार्ट्स ऑफ फ्लोरिडा, वो एक टीम में लाइक शामिल हो गए एंड दे आर फाइटिंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूएस फोर्सेस. एंड द रीजन वाई दे आर फाइटिंग इज कि जो प्रेसिडेंट है वो इसकी थर्ड टर्म है और वो एक डिक्टेटर बन गया है. तो वो सारी चीजें वो अपने आप ही वांट्स टू रन द कंट्री. उसने सारे राइट्स एंड फ्रीडम्स खत्म कर दिए हैं, उसने एफबीआई खत्म कर दिया है. सो ही इज बिकम लाइक अ डिक्टेटर. और ये जो 3 स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी फोर्सेस ज्वाइन की है, दे बिकम लाइक अ रेबल फ्रीडम फाइटर काइंड ऑफ ग्रुप जो अब लड़ रहे हैं. सो that's kind of the basic background. उसके अलावा हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है. So from the trailer, I really thought that this would be about the issues that are actually on ground जो US में अभी है, जिसमें racial issues हैं. There are so many other things going on. अभी election आने वाला है and all of that. So I thought कि उसके लिए कुछ movie होगी. But apparently that was not the case. When the movie started, it showed कि ये तो कोई journalist की story है. And ये चार they are like war journalists. And they are on a road trip from New York City और वो जा रहे हैं Washington DC. और once again ये civil war का time है, तो ये एक हमें basically they've put us into the shoes of these journalists, and that's what Alex Garland wants कि हम इस story को और इस movie को देखें from the eyes of these 4 journalists. They shoot journalists on sight in the Capitol. Every instinct in me says this is death. Bloody. Every time I survived the war zone, I thought I was sending a warning home. Don't do this. But here we are. There's some kind of misunderstanding here. What? Well, you're American, okay? Okay. What kind of American are you? फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी जो है वो तो बहुत ही स्लो है, टोटली अनएक्सपेक्टेड. कुछ हो ही नहीं रहा था एंड बस ये जर्नलिस्ट है वो रोड पे जा रहे हैं और कोई ना कोई टाउन्स एंड सिटीज हैं जो जल रही हैं एंड थिंग्स लाइक दैट बिकॉज सिविल वॉर का स्टेट है. बट it was weird because half of the movie like it's going on without anything really concrete happening, right? And once again ट्रेलर से ऐसा लग रहा था oh my god पता नहीं क्या लड़ाइयाँ हो रही होगी and all this action, full action packed movie होगी. ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, at least for the first half of the movie. Second half में हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा action और बढ़ गया है और ये journalists are put in situations where basically they are like death defying situations, right? So वो थोड़ा सा action बढ़ रहा है which creates a little bit of more excitement. जब वो वॉशिंगटन डीसी पहुंचते हैं तो वहां तो फुल फोर्स में जंग हो रही है. नाउ दिस इज लाइक ऑलमोस्ट द लास्ट पार्ट ऑफ द मूवी, मे बी लास्ट 15-20 मिनट्स, जिसमें फुल एक्शन है बिकॉज वहां पे यू सी ऑल दीज मिसाइल्स फ्लाइंग और सारे वॉशिंगटन डीसी के मॉन्यूमेंट्स उड़ा रहे हैं, लिंकन मेमोरियल उड़ रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या ब्लास्ट हो रहा है. एंड अल्टीमेटली दे वांट टू एंटर द व्हाइट हाउस बिकॉज वहां पे प्रेसिडेंट साहब है. गाइस ओवरऑल मूवी थोड़ी डिस्टर्बिंग है.
Basically what Alex Garland is trying to do in this movie is वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक वॉर या एक सिविल वॉर या सिविल अनरेस्ट या सिविल डिस्टर्बेंस के अंदर there is no glory. अगर मुल्क के अंदर if there are these factions that are fighting amongst themselves, ये पूरे मुल्क को बर्बाद कर सकता है. So that is what basically he wants us to actually notice. The movie is not about कि कितने हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और कितने जेट फाइटर आ रहे हैं और कौन मर रहा है और कौन हीरो है. It's more about कि एक war type situation जब हो जाती है तो इसमें सबका नुकसान है. That is what he's basically trying to tell you. And इसने इतने अच्छे तरीके से ये किया है because इसने ये journalist को use किया है and he wants us to look at this entire civil unrest situation being in the shoes of these journalists. Because journalists तो बिल्कुल unbiased होते हैं, वो किसी की साइड पे नहीं होते कि हमें ये पसंद है या ये president होना चाहिए या ये political affiliation है. So it's a great way of showing through the eyes of these unbiased folks के what the situation is like when civil unrest happens in a country. So basically वो एक country को destroy कर देती है. That's what he's trying to say. और एक और चीज जो इसने बहुत अच्छे तरीके से की है कि इसने एक रेड स्टेट और एक ब्लू स्टेट बेसिकली आप कहना चाहे तो एक उन्होंने टेक्सास और कैलिफोर्निया who actually don't get along too well on political terms उसको उसने साथ मिला दिया है. So he's basically showing कि जब जरूरत पड़ती है in the time of need आपके जो भी political affiliation है आप उसको साइड पे रख के you get together to fight against one evil जो इसमें is the president of the United States. So overall जब movie end हुई तो I was a little disappointed honestly to tell you at first because मैं completely different समझ रही थी ये movie को from the trailer that I had seen so many times. So I went into the theater with a completely different kind of mindset of what this movie would be. But जब movie actually शुरू हुई and then once it's finished, I was like, okay, what happened? Seriously, ये कौन सी movie थी? ये journalist कहाँ से आ गए? And what is going on? So I was disappointed at first, to tell you honestly. But then now when I'm doing this video after a few hours, I feel कि Alex Garland जो है उसने जो deep meaning है behind this actual story is something that he's trying to tell people. And I think he's done a really good job doing that. और इसने जो ये journalists use किए और उनकी जो acting है इसके अंदर that is also excellent. तो main cast जो है उसमें Kirsten Dunst है, Wagner Moura है, Cailee Spaeny hai, and then there is also Stephen McKenna Henderson. In चारों की acting is just fantastic, and it's basically its story is around them and their journey from New York to Washington DC. So I leave it up to you guys कि आपको ये movie cinema में जाके देखनी चाहिए कि नहीं. I think you will either love this movie or you will either hate this movie. So if you look at the online reviews or any ratings, certain लोगों ने तो इस मूवी को 5 out of 5 दिए and certain लोगों ने critics ने इस मूवी को only 1 star दिया है. So it's a very very different kind of the rating जो critics ने दी है क्योंकि ये एक बहुत ही dystopian type of version है of the US and I don't think everybody wants to understand or even want to get involved in a story like this क्योंकि वो बहुत ही as I said disturbing है and people को एक reality check मिल रहा है कि ये कल उठ के actually भी हो सकता है आपके मुल्क में. So it's a little not very pleasing for people. So I understand why the critics are so diverse in their views and their ratings. According to me, I would give it probably a 2.5 out of 5. Once again, thank you so much for watching my video. Please अगर आपने subscribe नहीं किया तो subscribe करें, like करें, comment करें. And do press the bell icon for getting information about the next video. Thank you.